Come on students, now we'll start the next problem of non-profit organizations. So far we have completed two problems. Hope you have watched the first two problems. And now we are in the third problem. Almost 90% points will be same in every problem except some 10-20% the points will be different. Some new adjustments, some new items will come across. But almost 80 to 90% the points will be same. Every problem what we are doing, income and expenditure account. Now see the third problem. Problem number 3, you see. The following is a summary of receipts and payments account of Shakuntala Sports Club for the year ended 31st March 2009. Receipts and payments account is given, other information is given. From this we have to prepare income and expenditure account. So receipts and payments account, I told you in the previous video, we have to follow some rules how to make the income and expenditure account. Receipts and payments account, opening and closing balance, first of all we should ignore. So first item, balance 14,100 should not be taken. Second, subscription is a revenue income. So income side will take subscription. But any adjustment is given? Yes. Subscription includes 700 of the previous year and 1200 for the forthcoming year. Forthcoming year means next year. तो ऊपर जो subscription 38,500 is given in receipts and payments account. तो वो 38,500 में से we subtract 700 of last year and we subtract 1200 of the next year. Then one more adjustment is given, subscription outstanding for the current year 1000. Current year subscription outstanding will be added. So to 38,500 we subtract 700, we subtract 1200 and we add up 1000. That is the adjustment for subscription. Donation 9,200. And it is given in the adjustment, donations are to be capitalized as per the bylaws. Capitalized का मतलब होता है, it will be taken to the balance sheet. Donation should not be considered as income, specifically given in the problem. Sale of refreshments, this is a revenue income. We should take it on income side. Interest on fixed deposit, that is also a revenue income side. Locker rent, that is also an income side. So we have seen, except donations and opening balance, all items will take. Then general expenses is a revenue expenditure, will take. Rent and taxes, revenue expenditure. Traveling expense, revenue expenditure. Postage and stationery, revenue expenditure. Bats and balls, these are the cricket equipments. This is a capital asset. So purchase of bats and ball is a capital expenditure. It will go to balance sheet. Remember this point. So every problem some new points will come across. In this problem, this is the new point. Purchase of bats and balls is an asset. It will go to balance sheet. This will not be taken in income and expenditure account. Then books. Books purchased also is an asset. It will go to balance sheet. Then furniture is an asset. It will go to balance sheet. तो पेमेंट साइड पे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा, एसेट्स परचेस करेंगे, उसको बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा. And we are not making the balance sheet, so ignore. Refreshment is a revenue expenditure, we will take into account. Newspapers periodical is a revenue expenditure, we will take it as an expenditure. Last closing balance, ignore. So we have seen which are the items to be taken, which are the items not to be taken. Adjustment, subscription, we have already discussed. Donations are to be capitalized, just now I told you. Prepare income and expenditure account. Very simple problem. Only the thing you have to remember, which are the items not to be considered. That you have to remember. Now, subscriptions received 38,500 minus last year subscription 700 minus next year subscription 1200. दोनों को भी माइनस कर देंगे, लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर. देन ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 1000. तो अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन इनकम इज 37,600. देन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, लॉकर रेंट, all these are revenue incomes. We should take into account. No adjustment, nothing. Take the total. Now debit side, general expenses, rent and rates, traveling, postage, refreshment, newspaper and periodical. All these are revenue expenditure. No adjustment are required. Directly we have taken. Now take the total on the credit side, 60,200. From 60,200 subtract all debit items. We'll get the balancing figure 27,960. This 27,960 is the surplus or excess of income over expenditure. That's it. This is the third problem.
Now see the fourth problem. The following particulars relate to Abhilash Sports Club. So what information is given? Income and expenditure account for the year 2006-7. So year begins from 1st April 2006 and ends on 31st March 2007. Income and expenditure account is given in the problem. Then receipts and payments account for the year 2006-7 given. So this is the first problem in which income and expenditure account is given, receipts and payments account is given. The assets on 1st April 2006 opening, beginning of the year, some assets are given. हमारा year begin हो रहा 1st April 2006 को और end होगा 31st March 2007 को. तो 1st April 2006 what are the assets? Club ground 26,400, equipment 15,000, furniture 2,400. Subscription are in arrear on that day amounted to 480. Prepare balance sheet as on 31st March 2007. End of the year. We have to make the balance sheet as at 31st March 2007. This is a peculiar problem. This is a difficult problem. It's not as easy as first three problems. So you have to put some extra effort in learning how to make the closing balance sheet. देखिए closing balance sheet के लिए हमको opening balance sheet का होना जरूरी है. Without opening balance sheet we cannot make the closing balance sheet, because in opening balance sheet we have to find out the capital fund. That capital fund is not given in the problem. The beginning of the year, how much was the capital fund? To find out that, we make the opening balance sheet. Now see here, opening balance sheet on 1st April 2006. So what are the assets? Last line it is given. First of all, receipts and payments account will begin with opening cash balance and ends with closing cash balance. हमेशा receipts and payments account में debit side to balance brought down, that is opening cash in hand, और end of the year में by balance carried down, closing cash. तो यहाँ पर opening balance कितना है देखिए, receipts and payments account debit side to balance brought down 2,520. 2,520 is the opening cash balance that will be taken in the opening balance sheet. तो opening balance sheet में cash in hand 2,560 from receipts and payments account. Apart from that, what are other assets? Other assets are club ground 26,400. I have taken 26,400. Equipment 15,000. I have taken 15,000. Furniture is 2,400 taken. And subscription in arrear on that date 480. Chali, all the assets we have taken, which are given in the problem. Now liabilities, it is not given in the adjustment, but we compare the expenditure with the payment. Expenditure with payment and receipts with income. Receipts और income को compare करना, expenditure और payment को compare करना, कोई item है क्या? First item is given salaries. Payments, expenditure side. Expenditure में salaries 900 दिया है, जबकि payment of salaries are 600. तो current year में payment of salary 600. जबकि एक्सपेंडिचर ऑफ सैलरी इज 900. इसका मतलब एक साल की सैलरी 900 रुपए हो रही है, जिसमें से 600 रुपीज पे करे, बाकी के 300 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी है. दैट इज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द करंट ईयर. सो हियर करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 माइनस 600, 300 आई हैव टेकन. दिस इज द करंट ईयर सैलरी आउटस्टैंडिंग. सैलरी 900 रुपए एक्सपेंडिचर है, 600 रुपए पे करे, बाकी के 300 रुपए नहीं पे करे, आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. नाउ सी केयरफुली. 1,320 is the expenditure on printing and stationery, जबकि printing and stationery amount paid is 1,560. पेमेंट जो करे 1,560 का पेमेंट करे printing and stationery, पेमेंट ज्यादा करे, जबकि करंट ईयर का printing and stationery 1,320 ही हो रहा है. तो फिर ज्यादा क्यों पे करे, कब का पे करे? दो पॉसिबिलिटीज है. वन पॉसिबिलिटी इज देयर, द डिफरेंस 1,560 माइनस 1,320. ये जो डिफरेंस आ रहा 240 का डिफरेंस आ रहा, 1,560 माइनस 1,320. तो 240 रुपीज का जो एक्स्ट्रा पेमेंट करे वो दो पॉसिबिलिटी, एक तो लास्ट ईयर का हो सकता, या नहीं तो आने वाले साल का एडवांस में पे करा हो. लेकिन वन पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, no business organization will pay advance amount for printing and stationery. Printing and stationery को आने वाले साल का प्रिंटिंग का अभी एडवांस में पे नहीं करते, ये रिमोट पॉसिबिलिटी है. फिर जो एक्स्ट्रा पे करे कब का पे करे, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो सकता,
The second possibility is last year there was some printing and stationery outstanding and that 240 rupees was paid during current year. Was paid during current. ये possibility हो सकती. Last year printing and stationery खरीद लिए थे, पेमेंट नहीं करे, current year पे करे, कितने का? 240 rupees का. तो this is the outstanding printing and stationery of last year. तो लास्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1560 minus 1320 240. That's all. Now we can take the balancing figure of opening balance sheet. Asset side you take the total 46,800. 46,800 minus 240 46,560. This is the balancing figure. What is the balancing figure? Capital fund. तो ओपनिंग बैलेंस शीट प्रॉब्लम में नहीं कह रहा है बनाओ बोल के, बल्कि हमको बनाना जरूरी है, मस्ट है. व्हाई? We need the opening capital fund. Without that, we cannot make the closing balance sheet. So opening capital fund we got 46,560. Now we'll come to the closing balance sheet. अब closing balance sheet में एक एक item cash in hand opening में था. अब closing में cash in hand कितना है? तो see the receipts and payments account last item by balance carried down. तो by balance carried down 4,680. This is the closing cash in hand. तो कैश इन हैंड 4680. नाउ वी टेक ऑल द बिगिनिंग एसेट्स. जो बिगिनिंग एसेट्स है वो एंडिंग एसेट्स में भी रहेंगे. एग्जांपल क्लब ग्राउंड. क्लब ग्राउंड वाज 26,400. नाउ आल्सो वी टेक क्लब ग्राउंड 26,400. नेक्स्ट आइटम इक्विपमेंट. नाउ इक्विपमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 15,000. इज देयर एनी एडजस्टमेंट फॉर इक्विपमेंट? सी द प्रॉब्लम. नाउ इट इज गिवन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड depreciation on equipment. Expenditure side दे दिया depreciation on equipment 5,400. तो equipment beginning of the year में 15,000 था, जिसमें से 5,400 depreciation provide कर दिए. तो 15,000 minus 5,400 9,600 will be the value of equipment at the end of the year. Next है furniture. Furniture 2,400, no adjustment. कोई भी रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फर्नीचर कहीं भी नहीं दिया. तो जो फर्नीचर बिगिनिंग में था वही फर्नीचर एंड में 2,400. नेक्स्ट कम सब्सक्रिप्शंस. नाउ वेरी केयरफुली यू हैव टू सी हाउ मच इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन इनकम. सब्सक्रिप्शन इनकम देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर 9,360. तो 9,360 इज द इनकम ऑफ करंट ईयर फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. अब रिसिट साइड पे देखिए करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव करे. करंट ईयर हमारा कौन सा है? 2006-7. या सेपरेटली दिया सब्सक्रिप्शन फॉर 2005-6, 2006-7, 2007-8 सेपरेटली. तो वी नीड द करंट ईयर. करंट ईयर 2006-7. 2006-7 के सब्सक्रिप्शन रिसीव करें 9,000. एक्चुअली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन इनकम 9,360 है, लेकिन रिसिट साइड कह रहा है कि करंट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करे ओनली 9,000 रिसीव करे. तो इसका मतलब करंट ईयर के 360 रुपीज आने का है. 9,360 माइनस 9,000, तो 360 रुपीज सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग. यहां पर ले लिया outstanding subscription 360 rupees. Apart from that, last year outstanding subscription, how much outstanding subscription of last year? 480. opening balance sheet देखिए 480 subscription outstanding था. अब last year के receive कितना करे? receipt side पे देखिए 2005 2006 last year 360 rupees receive करे, जबकि due कितना था last year? 480. out of 480 we have received only 360. तो 480 माइनस 360 120. तो लास्ट ईयर के 120 रुपये आने का है और करंट ईयर के 360 रुपीज आने का है. तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 360, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 120. टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 480 रुपीज. 480 rupees is the outstanding subscription. Then rent receivable. Now you see the rent value. Rent. Income side. Income side, rent income is 2,400. And receipt side you can see rent received is 2,100. Actually current year की income 2,400 rent income है, लेकिन receive करे rent 2,100 only.
2400 रुपये में से 2100 रुपए रिसीव करे, बाकी के 300 रुपए रेंट आने का है. We have to receive the rent. तो rent receivable 2400 minus 2100, 300 rupees rent receivable. Now we compare the next. तो एक एक आइटम को कंपेयर करेंगे. पहले इनकम साइड एंट्रेंस फीस इनकम 6300 एंड डेबिट साइड एंट्रेंस फीस 6300. तो एंट्रेंस फीस जितनी रिसीव करे उतनी ही इनकम है. 6300 रिसिट, 6300 इनकम. तो दैट विल नॉट कम इन बैलेंस शीट. नाउ सेकेंड वन सब्सक्रिप्शन के बारे में अभी देख लिया है. 9360 इनकम है, 9000 रिसीव करे तो 360 रुपीज आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है. और लास्ट ईयर का ड्यू 480 था, 480 में से 360 रिसीव करे तो 120 लास्ट ईयर के भी आने का है. तो टोटल सब्सक्रिप्शन 480. उसके बाद रेंट दिया है, रेंट 2400 में से रिसीव करे 2100, 300 रुपीज रेंट रिसीवेबल. तो क्रेडिट इनकम साइड पूरे तीनों में, इनकम साइड ऑल द थ्री वी हैव टेकन. नाउ विल कम टू द एक्सपेंडिचर साइड. इनकम साइड पूरे देख लिए, अब रिसिट साइड पे भी देख लीजिए. रिसिट साइड का ओपनिंग बैलेंस वी हैव ऑलरेडी टेकन इन ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड. और एंट्रेंस फीस देयर इज नो चेंज. सब्सक्रिप्शन में 2005, 360 ये आ गया. देन करंट ईयर का ले लिए 2007, 2008 का मतलब नेक्स्ट ईयर, आने वाला साल. नेक्स्ट ईयर के भी सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिए, यानी आने वाले ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में एडवांस में आ गया. इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दैट विल बी टेकन ऑन द लायबिलिटी साइड. तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो एसेट साइड, आने का है, जो आने का है वो एसेट है. और जो एडवांस में आ गया अभी रिसीव नहीं करे, रिसीव कर लिए लेकिन इनकम करंट ईयर की नहीं है, वो इनकम कब की है, वो नेक्स्ट ईयर की है, तो उसको लायबिलिटी साइड. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2007-8 240. तो सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद रेंट रिसीव्ड हो गया. तो ऑल द आइटम्स वी हैव कंपेयर्ड द इनकम विथ रिसिट्स वी हैव कंप्लीटेड. नाउ पेमेंट विथ एक्सपेंडिचर, पेमेंट और एक्सपेंडिचर को कंपेयर करेंगे. फर्स्ट एक्सपेंडिचर सैलरीज 900 रुपीज इन एक्सपेंडिचर, 900 रुपीज एक्सपेंडिचर. पेमेंट कितना करें 600. तो आउट ऑफ 900 ओनली 600 रुपीज पेड, 300 रुपीज सैलरी आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300 वी हैव टेकन. नाउ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर 1320 है, जबकि पेमेंट जो करे 1560 है. 240 रुपए ज्यादा पेमेंट करे. तो वो पेमेंट कब का था, वो लास्ट ईयर का था. तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 240, राइट. उसके बाद एडवर्टाइजिंग 960 रुपीज इज एन एक्सपेंडिचर और पेमेंट भी 960 है. एक्सपेंडिचर भी 960, पेमेंट भी 960, दोनों इक्वल. तो दैट विल नॉट कम इन बैलेंस शीट. ऑडिट फीस 300 रुपीज ऑडिट फीस एक्सपेंडिचर. एनी ऑडिट फीस इन द पेमेंट साइड? नो, पेमेंट्स में कोई भी ऑडिट फीस नहीं दिया. एक्सपेंडिचर में दे रहा है कि ऑडिट फीस है, तो इसका मतलब ऑडिट फीस पे नहीं करे. देयर इज ऑडिट फीस विच आर ड्यू, आउटस्टैंडिंग. तो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस इज अ लायबिलिटी. तो लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 300. नेक्स्ट कम्स फायर इंश्योरेंस 600 रुपीज एक्सपेंडिचर. whereas how much fire insurance paid 720. 720 रुपए फायर इंश्योरेंस पे कर दिए, पेमेंट हो गया, लेकिन एक्सपेंडिचर है ओनली 600 रुपीज. तो बाकी के 120 रुपीज क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस. जो ज्यादा पे करते हैं वो एडवांस में पे करते हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं रहता है. इंश्योरेंस विल बी पेड इन एडवांस. तो प्रीपेड इंश्योरेंस, हियर यू कैन सी प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 720 minus 600 120. Then depreciation already we have taken. Now payment side, income expenditure side, all items we have seen. Now payment side, you see any item is left? Yes. Salaries over, printing and stationery over, advertising over, fire insurance premium over, investment 12,000 rupees का पेमेंट करे इन्वेस्टमेंट के लिए. That is nothing but purchase of investment. तो इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एसेट साइड. तो इन्वेस्टमेंट्स 12,000. Then last one, closing balance 4,680 we have taken. That's all. So we have taken all the items in the balance sheet. Now we'll check our balance sheet will get tallied. Total of assets 55,980 and total of liability. Here, capital fund.
How much capital fund was there at the beginning of the year? 46,560 we have calculated by making opening balance sheet. And how much is the surplus as per income and expenditure account? In the problem, income and expenditure account is given, the surplus is given 8,580 in the problem. That surplus will be added to capital fund. Then the total capital fund at the end of the year will be 55,140. Now take the total on the liability side, 55,980. This is the problem. And remember, this problem is a little bit difficult problem. In the first instance only, you may not be able to understand. Watch it again 2-3 times. If you watch this problem, definitely you can be able to get the comment. Understanding logic, that you have to focus. So we have completed problem number 4.